on the leak of the NEET paper. Massive protests are underway outside the NTA office in New Delhi. ABVP workers are holding these protests over the cancellation of the exam following allegations of paper leak and exam irregularities. Heavy security deployment is seen on the ground there. Javed Hassan, my colleague, is there outside NTA headquarters in New Delhi. जावेद, फिलहाल किस प्रकार का माहौल है? काफ़ी हैवी पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट दिखाई दी जा रही है। यहाँ पे एबीवीपी के तमाम छात्रों की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया था, फोर्स भी किया गया है। यहाँ पे छात्र हम उनसे बात करते हैं। एबीवीपी का क्या रुख है एनटीए को लेकर? एबीवीपी का क्या रुख है एनटीए को लेकर? एबीवीपी का जो रुख है वो छात्र हितों के हित में। अगर एनटीए जैसी जो एजेंसी है ये देश में छात्रों के हित में काम नहीं कर पा रही, हम 2024 में भी यहीं पर इसी स्थान पर इतनी ही धूप में आए थे जब भी ही पेपर लीक होने की समस्या हमारे सामने आई थी। आज भी हम उसी समस्या को लेकर एनटीए के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता अंदर एनटीए के ऑफिस पर ताला मारने गए हैं। जो ये पुलिस प्रशासन है ये अंदर गए हैं कुछ छात्र, कुछ जो छात्र हैं, जो हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं वो अंदर पहुंच गए हैं। वो एनटीए जो ऑफिस है उसके ऊपर ताला मारने गए हैं। पुलिस ने कहा कि अंदर जो भी जाएगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। जो पुलिस प्रशासन है ये एनटीए के दबाव में है। मैं तो पुलिस प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि उनके भी बच्चे होंगे, वो भी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अगर वो एग्जाम लीक हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। आज एबीवीपी की तरफ से ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। हालांकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार का भी कड़ा रुख है। दिल्ली में भी सरकार है बीजेपी की, आप लोग उसी विंग है बीजेपी के, तो एबीवीपी इसको कैसे आगे आगे मोल्ड करेगी ऐसे छात्र को लेकर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये विद्यार्थी परिषद है ये किसी भी राजनीतिक संगठन के द्वारा समर्थित नहीं है। ये छात्र हितों के लिए लड़ता हुआ आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। हमारी जो ये लड़ाई है ये जब अगर हम धरातल पे ये देखेंगे कि जो ये एनटीए जो एजेंसी है इसके कारण ये पेपर जो लीक होता है, हमारा जो मुख्य मांग ये है या तो इस एनटीए को बंद कर दिया जाए। 2018 में भी जो पेपर हुआ करते थे वो सीबीएसई के द्वारा होते थे, उससे पहले भी पेपर। एनटीए कह रहा है कि कोई भी जो एग्जाम है वो दोबारा शेड्यूल डेट आएगा, उसका शेड्यूल आएगा और सेंटर चेंज नहीं होगा। लेकिन 22 लाख के करीब छात्र एग्जाम दे रहे थे, उनके करियर पे पूरा बड़ा सवाल उठा है। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? हम सिर्फ और सिर्फ एनटीए को जिम्मेदार मानते हैं। एनटीए जो सिर्फ और सिर्फ बस किस पे आधारित है कि ये जो टेंडर निकालते हैं, जिसने भी L1 जो आया, जो लोएस्ट कॉस्ट जो भरेगा उस टेंडर की, उसको पेपर कराने के लिए अपना सेंटर वहां पे भेज देते हैं। इनके पास अपनी प्रेस भी नहीं है, जिसको ये मुद्दा बना देते हैं कि हमारे पास हमारी प्रेस नहीं है। भाई प्रेस बनाओ, सरकार इतना पैसा आपको दे रही है, जो हमसे जो एग्जाम की फीस ली जाती है वो आपके पास आ रहा है। इससे पहले भी बिहार और झारखंड में पेपर लीक हुआ था, जो ट्रंक में क्वेश्चंस पेपर आया था कोड के साथ, वो लीक हो गया था। उसमें भी कई छात्रों का एक बड़ा नेक्सस पाया गया था। बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सीबीआई ने उस केस को हैंडओवर किया था। अब एक बार फिर से सीबीआई को जिम्मेदारी मिली है। सीबीआई के 5 सदस्य जो टीम है वो अंदर है। ऐसे में अब एबीवीपी जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कल भी एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, क्या ये सिर्फ राजनीतिक रहेगा या वाकई छात्रों के करियर को लेकर जो सवाल उठ रहा है उस पर लोग जवाब देंगे? मैं अन्य संगठन की नहीं कहता कि वो कहाँ, एबीवीपी की पूछ, वो कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ नहीं। हम जो धरातल है, धरातल पर अगर आप देखेंगे तो एनटीए इसके पीछे जिम्मेदार है। जो इसके जो लोग हैं, जो एक चेन है, ये एनटीए द्वारा ही बनाई गई है और आगे भी एनटीए द्वारा बढ़ाई जा रही है। सीबीआई की जो कमेटी का जो गठन था वो पहले भी हुआ था और आज हमें पता चला। प्रदर्शन भी आप लोगों का जारी रहेगा इसके खिलाफ? हमारा प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा, जब तक ये जो चेन है, जब ये पता नहीं चल जाता कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो विद्यार्थियों के हित के खिलाफ खड़े हुए होते हैं। प्रदर्शन खत्म हो गया, पुलिस फोर्स भी चले गई, आपके छात्र भी यहाँ से चले गए। क्या हमारे जो छात्र हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया अंदर जाए हुए हैं, और जो हमारे जो और भी छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो हमारी जो, अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, कुछ हमारे बीच में जिन्होंने, नाम बता दीजिए। मेरा नाम आलोक खत्री है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। मैं अपना जो एग्जाम है उसको दे के यहाँ आया। मेरा एग्जाम थोड़ा लेट छूटा, मैं एग्जाम दे क्या पाए? हाँ, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो नीट का मुद्दा हो या किसी अन्य छात्र का हित का मुद्दा हो, हम वहाँ जब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारे जो छात्र हैं उनको एक विश्वास नहीं मिल जाता कि उनको न्याय मिला है। देखिए, आलोक थे एबीवीपी की तरफ से, इनका कहना है कि अपना एग्जाम दे के यहाँ पर आए हैं। छात्रों की तरफ से आप लोग बड़ा
देखिए छात्र अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की गई, अंदर जाने की कोशिश की गई। अभी पुलिस फोर्स कुछ कम हो गई है, लेकिन पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया एनटीए को। भले ही इस गेट से देखिए, जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस बैरिकेडिंग को 3 लेयर पे सिक्योरिटी रखी गई है यहाँ पर, और एनटीए के दफ्तर को अलर्ट पर रखा गया है। और यहाँ पे सभी गेटों पर जो है दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं और रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। ये क्योंकि ये ओखला इंडस्ट्री थाना इलाके में ये एनटीए का दफ्तर आता है, और इस वक्त जो हम मौजूद हैं ये बिल्कुल कालका जी मंदिर के बिल्कुल अपोजिट जो है एनटीए का दफ्तर है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले नीचे ये जो पंपलेट्स आप देख रहे होंगे, ये जो पड़ा हुआ है, ये तमाम स्लोगन्स लेकर यहाँ पर जो है आपको एबीवीपी की जो टीम यहाँ पर जो स्टूडेंट यूनियन की जो टीम थी एबीवीपी की, वो यहाँ पर पहुंची थी। और अब यहाँ पर प्रदर्शन लगभग खत्म हो गया, लेकिन एबीवीपी का कहना है, जैसा कि हमने बात किया, कि ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और सीधा सवाल जो है वो एनटीए को लेकर है, और एनटीए इस वक्त कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जी जावेद, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड से। व्यूअर्स, आई एम in fact also joined in by Professor Amrit Pattojoshi, who's the ex-officio honorary secretary at Indian Psychiatrists Society. Professor, thank you very much for joining me here. Year after year, we're seeing NEET exam facing these kind of irregularities, paper leaks, commissions are formed and set up. Still, recommendations are not adopted, and once again, the loop goes on. Who do you hold accountable? I'll tell you that like I was just hearing a ABVP activist and a student who was speaking about what happened in 2024. I think the same things cannot be repeated. I'll tell you, it is not about only 33 lakh students who are giving the exams. Here there are 33 lakh families, or maybe 50 lakh families, who are also directly involved or indirectly involved in the whole process. So we are looking at the future of the country which is at stake. Now people slowly start losing confidence in institutions, slowly start losing control over, the whole thing is, they go through a lot. I'm not just speaking about people who have gone for 2 years, the people who are dropouts, the people who are coming from remote places, whose parents have sacrificed everything to live their children's dream. And once somebody gives their exams, and once somebody thinks that I've given my best, and 3 days later he realizes that it was a farce, the whole examination system was a scam. And look at the people now. We are looking at the most prestigious exam, that is the NEET exam. Now our country's future is dependent on that. The health system is dependent on that. The patients lose confidence in the doctors. The doctors themselves think that whether my colleagues are of the right quality. A lot of things are involved in it. Yes. And it puts a lot of credibility on the whole system, the whole, what will I tell? It's heartening, because my daughter has just joined medical science, and I know how much struggle it takes for a parent, for a child to go through the process, the disappointment, the whole trauma cycle, the sleep, the cognitive fatigue. It's like a big threat, and in a country where we are dependent on marks, we are dependent on entrances, and as if our life depends on all these things. It's as if you are taking away somebody's life when such devastating news comes forward. And it's not that it is not happening, it's happening regularly. It's that sometimes people are getting caught, because it's a system. It's a very, it's not that somebody just took out a question paper and gave it to 3 people. It's a system which is running. Sometimes people are getting caught, but most of the time people are not getting caught. Unless this system is not changed, until it is not revamped, I think a whole generation will be suffering. Professor, what do we know about whether the number of doctors that we have in the country is sufficient as of now? Because if not, these kind of exam irregularities is only worsening the situation. I think now we have sufficient doctors. The whole issue is about doctors not going to peripheral places, doctors being concentrated only in urban and semi-urban places. So and in many states now, people who are going to the the rural ground are being, incentives are being given. They're given better marks for PG exams. I think now we have reached a stage where medical science there is not much deficiency in terms of doctor to patient ratio. I think with the last 5 to 6 years, we have seen enough specializations and super specializations coming out, and time we stopped this epidemic of people going for NET and engineering, because
because we are creating a lot of supply with very less demand. In another 2 to 3 years, we'll be seeing that doctors will be unemployed. I think it has to stop. All right. Any recommendations that you would want to suggest so that these paper leak incidents stop in the future? I think a holistic approach should be given. One entrance should not be given this much of importance, or it should have so much bearing on the future of our children. It should be holistic. +2 marks, their aptitude. To somebody become a doctor. A doctor is not just somebody who cracks the MCQs. I think that's why we get a lot of doctors who don't have empathy, who don't have care. We have people who are good in MCQs, who might do good in their subjects. But if you really look at the character of a doctor, the personality of doctor, somewhere those things are not taken into account. So we have people who are only good in academics who are becoming doctors. The other aspects are being neglected. So if you have a holistic approach, I think if everything is not dependent on one day, these type of scams will reduce. And I would tell one thing also. There are a lot of poor people who have come from the peripheries and staying in the cities, preparing for their entrances, and have gone back after giving their exams. Now, if the exams are postponed for 1.5 to 2 months, what will happen to them? Can they come back? Because most of the coaching institutes are shut. Will they get a library to study? Will they get a place to study? I think we need to take care of the people who have done well in the exams and have just switched off after giving a very good exams. It's like you won a World Cup, you switch off. And after 7 days or 10 days, you are told that the World Cup was fixed and you have to play the final again after 10 days. It's tough. It's very tough for people who have really given their everything for that day. Right. I think we need to take care of those children also. And I would have a recommendation, parents, just go slow on your children. Don't force them to get into academics as soon as possible. Don't compare. Don't discuss the what has happened, the marks and all. Let children give their best. Let them come prepared mentally, emotionally, and physically, and just let them relax. I would tell the parents. Professor, thank you very much for joining us and for speaking to us here on NewsX. And with that, viewers, we are going to proceed